हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय शो आप और हम सौरभी के संग। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं मोहिता दत्ता। मोहिता इज अ कम्युनिकेशन कोच, शी इज ऑल्सो अ चेंज मेकर एंड शी इज winner of several trophies of Toastmaster. So I welcome you Mohita here on my platform आप और हम सौरभी के संग। Hi, Saurabhi. Thanks a lot for inviting me to your platform. So happy to be here. You've been doing wonders on your platform. I have been seeing some of your shows on YouTube and otherwise, and I have read your books too. Thanks a lot for having me here. It's a pleasure, Mohita, to invite you to my platform, and I think that I'm going to help people. Not I, we are going to help people because I have invited you here to talk upon a very important topic, and that is communication. So let's begin the session. And first of all, I would like you to tell our audience, हमारे audience को मोहिता आप बताइए कि what is communication? बिल्कुल सही साज पे आपने बात छेड़ी। कम्युनिकेशन क्या चीज है? कम्युनिकेशन बड़ी एक सिंपल चीज है। जब हम लोग व्हेन वी आर बोर्न, हमारे सब सेंसेस इंस्टिंक्टिव होते हैं। हम सुन सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, राइट? ये सब इंस्टिंक्टिव है। पर हमें कुछ स्किल्स आगे बढ़ानी होती है, नर्चर करनी होती है, एंड वो उसमें से एक स्किल है कम्युनिकेशन। अगर आप ऐसे ही बात करते रहें विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, जैसे टाइम पास कर रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेशन का दर्जा नहीं दिया जाता। पर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसका आपको कोई आउटकम चाहिए, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, तो कम्युनिकेशन स्किल होना बेहद जरूरी है। अब आप ये सोच के देखो, हम सब ने टाइटैनिक का नाम सुना भी होगा, और शायद हम में से बहुत लोगों ने टाइटैनिक फिल्म भी देखी हुई, राइट? सो टाइटैनिक उस वास्ट ह्यूज बोट का नाम है, ह्यूज लाइनर which was 296 meters long, which sunk in the waters in 1912. हम लोगों ने सबने फिल्म देखी और देखा कि what struggle it was, right? But do we know why it happened, right? It was a gross violation of communication. मैं इसमें आपको बताती हूँ 3 points, 3 fundas which happened. ठीक है? एक तो ये है कि the basic tools went missing. बाइनोक्यूलर्स चाहिए, स्पेशली 1912 में जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लाइफ बोट्स चाहिए, राइट? एट द जस्ट व्हेन द बोट वाज गोइंग टू बी लॉन्च्ड, ऑफिसर्स का रिशफल हुआ एंड ड्रॉर्स की चाबी मिसिंग हो गई जिसमें था बाइनोक्यूलर्स। एंड जो लाइफ बोट्स थी वो सिर्फ 16 थी, विच वाज लेस देन 50% ऑफ द पैसेंजर कैपेसिटी, राइट? तो एक तो आपके टूल्स ही नहीं थे, टूल्स जो बेसिक क्रिटिकल टूल्स है वो नहीं थे। सेकेंडली, द शिप वाज वेरी ह्यूज, इट वाज अराउंड 296 meters. तो जो जिस गति से वो चलता था, इट वाजंट अजाइल, इट कुड नॉट रिवर्स, इट कुड हॉल्ट बट इट कुड नॉट रिवर्स इट्स डायरेक्शन, राइट? थर्ड, कैप्टन की बात किसी ने सुनी नहीं। एवरीबडी थॉट दैट दे आर डूइंग द बेस्ट, राइट? इन तीनों के ग्रॉस वायलेशन से, एंड दीज 3 आर कवर्ड इन कम्युनिकेशन। आप सोचिए कि आपकी भी एक कश्ती है, राइट? ईच वन ऑफ अस हैज अ बोट ऑन द रिवर ऑफ लाइफ और ऑन द ओशन ऑफ लाइफ। हर सवेरे एक नया दिन होता है, एक नया सीन होता है। कभी लहरें ऊंची उठती हैं, कभी दे आर काम सीज, sometimes you're enjoying it like a picnic, sometimes you are wondering whether there's going to be a thunderstorm. फिर आप एक मैप बनाते हैं, एक आप अपना डेस्टिनेशन मैप बनाते हैं, राइट? तो इन सब चीजों के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत होती है, योर लाइफ बोट, योर क्रिटिकल इक्विपमेंट, फिर बहुत अजाइलिटी, बड़ी निम्बलनेस ऑफ माइंड, ऑफ थिंकिंग, ऑफ फिजिकल पावर्स, राइट? एंड थर्ड, बीइंग द कैप्टन ऑफ योर शिप। तो यही लाइफ भी है कि हमको
हर तरह का क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए, हमको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। आप नेगोशिएट कर रहे हैं, व्हाट इज लाइफ सौरभी फॉर यू एंड आई एंड फॉर एवरीबडी वाचिंग दिस शो, व्हाट इज लाइफ? हर रोज नए मुद्दे, नए सिचुएशंस, एंड इफ वी कैन नेगोशिएट इट वेल विद द आउटकम विच वी थिंक, तो वो दिन अच्छा बीता, उसमें आपने अपने गोल्स को प्राप्त किया, राइट? तो उसके लिए आपको क्रिटिकल लाइफ स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, राइट? सेकेंडली, यू नीड टू बी अजाइल। इफ यू सी इम्पेंडिंग डेंजर, अगर जो आपको दिख रहा है कि उस दिन उस वक्त पे you need to be agile in your mind, in your thought process, and work out a strategy. So then you have to be nimble. आपको agility चाहिए mind में, right? Thirdly and very importantly, एक communication strategy चाहिए, एक कैप्टन चाहिए आपको अपने क्रू का। और आपका क्रू क्या है? ये जो सब सेंसेस हैं, या जो भी सब आपका ज्ञान है, या जो भी आपके टीममेट्स हैं, ये सब आपका क्रू है, राइट? एंड योर माइंड एंड योर थिंकिंग is the captain of your ship. So I would say to everybody here, don't let it be like Titanic. Don't let the boat of your life sink. आपको हर एक तरह के पोर्ट्स देखने हैं, आपके माइंड में एक मैप है, एक गोल्स हैं, मोटिवेशन है। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जरूरत है, जिससे आप अपने सुनिश्चित पोर्ट्स पे पहुंच पाए। So that is about communication. It's a skill and which we learn each and every day. And आप बुक से, अपनी सेल्फ काउंसलिंग से, कोचिंग से, सबसे सीखते हैं। And if you'll give me a minute more, Saurabhi, I'll just extend this a little more. कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या होता है, द समय जो टाइम है वो सीमित है। यू हैव लिमिटेड टाइम, you have limited opportunity, right? If you don't play it right, if you everybody has an objective there, so if you do not communicate and express yourself timely, तो वो सुनहरा अवसर, that golden opportunity gets missed, your communication goals get missed, and जो आपने पूरा साल की जो मेहनत है वो शायद it will go down the drain, it will not bear fruits, right? और अब तो हम ये देखते हैं पर्सनल लाइफ में भी, पहले से प्रोफेशनल लाइफ की बात थी, अब पर्सनल लाइफ में भी देयर इज अटेंशन डेफिसिट, you know, until you can relate to the person, until you can address that person's concerns, until you can answer to the the final specific answer of what is being asked or what you want to say, you may lose, sorry for that, let me just put it on silent, you may lose the other person's attention and valuable time. So I hope I could encapsulate communication for you. या वंडरफुली डिस्क्राइब्ड कम्युनिकेशन। मैं तो आपको बोलने वाली थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आप कवर करो, बट वो कैप्टन वाला, शिप वाला एग्जांपल देके आपने वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन कम्युनिकेशन, तो एवरीबडी नोज बेसिकली रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन को ही लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, बट आपने जो एग्जाम्पल दिया वो इतना अच्छा था जो जिसने कम्युनिकेशन को एज अ होल पिक्चर, एक जैसे मिसिंग पजल होता है, पीस होता है पजल का, आपने वो एकदम बैंग ऑन फिक्स कर दिया ऑन स्पॉट, और कम्युनिकेशन की कंप्लीट पिक्चर यहाँ ऑडियंस को बताई कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना, सुनना, लिखना और बताना नहीं है, उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। और इससे अच्छा एग्जाम्पल आई डोंट थिंक यू कुड हैव ब्रॉट इन फ्रंट राइट नाउ। नेक्स्ट जो है उसका भी थोड़ा पार्ट आपने कवर कर लिया। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी वो ये था कि बेसिकली वर्क प्लेस पे होता क्या है कि अगर टैलेंट है एंड कम्युनिकेशन आपकी वीक है, तो जनरली परसेप्शन है, आज का परसेप्शन है, आज के वर्ल्ड में लोग बहुत पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है टैलेंट और नॉलेज अगर कम है तो भी कोई बात नहीं, इफ यू आर एक्सेलिंग योर कम्युनिकेशन स्किल you are half through. So your take on that? Right, Saurabhi, you're so right. You don't. It is unfortunate that we see. They say around more than 50% of India's engineering graduates are unemployable. तो unemployable tag क्या होता है?
अनएम्प्लॉयबल तब कहते हैं कि उनके पास दे हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, उसमें कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज देयर, बट दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस. अब कोई आपकी मन की बात तो नहीं हर वक्त भाप सकता, राइट? नोबडी कैन रीड योर माइंड, राइट? यू नीड टू एक्सप्रेस. और इसमें बहुत लोगों को एंजाइटी हो जाती है. इसमें आई वुड लाइक टू टेल यू, Saurabhi, just like we were discussing just a little time back, that इसमें कभी कभी इंग्लिश में हाथ तंग होने का भी प्रॉब्लम रहता है, because the Indian business ecosystem is all in English, right? So, and that is your Lego pieces, those are your building stones, building blocks, right? Some people learn it on the job, put away anxiety, and learn to communicate, right? But those are the building blocks. The language is a building block. So my suggestion is कि इन building blocks से तो आप वाकिफ हो ही जाइए. Get yourself familiar with English language. Practice. There are a lot of resources to practice the language. And then use communication skills. इसमें मैं आपको एक acronym बताती हूँ. हर चीज आजकल स्मार्ट है. फ्रिज है तो स्मार्ट है, फोन है तो स्मार्ट है, कार है तो स्मार्ट है, राइट? एंड हम स्मार्ट से क्या समझते हैं, मैं आपको कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में बताती हूँ. स्मार्ट वो गोल्स होते हैं, मतलब कम्युनिकेशन जैसे हमने बोला गोल्स के मुताबिक होता है. आप वर्क प्लेस पे हैं, यू फील दैट यू गॉट लेफ्ट बिहाइंड इन प्रमोशंस और इन बोनस. साल का वो अहम दिन आया जिस दिन आपके अप्रेजल्स होने हैं, राइट? एंड यू गॉट मिस्ड. यू फील कि आपको दिया नहीं गया दैट प्रमोशन, दैट बोनस व्हिच वाज ड्यू फॉर यू, राइट? अब आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं. Now, instead of doing absenteeism, that you start bunking work, or you start having a rude attitude, or you start neglecting your work, right? उससे तो किसी से भी काम नहीं चलने का. Best is to communicate, right? And then, very importantly, communicate positively, right? Communicate why you deserve that promotion. Communicate why you deserve that bonus. Communicate how you can contribute to the company. See, you have to answer little voices in others' mind, right? जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ and I'm thinking what sort of audience do I have, right? किस तरह की मैं इंफॉर्मेशन उनको दूं जिससे उनको वैल्यूबल लगे, जैसे जिससे उनका लाइफ की वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स बढ़ जाएं, राइट? लाइक दैट. So these are the little voices in your audience's mind. You have to answer them through the communication, right? So agar jo if you've got skipped, then you have to answer the little voices. Ek to what can you contribute going ahead? You know, why do you think, आपको पता है कि जब आप बैठेंगे उनके सामने, so they'll say, okay, we have taken a look and we don't see why you deserve it, or let's say your colleague deserved it better, and what can you give to the company. तो आप पहले से ही empathize कीजिए उनके shoes में, go into their shoes, step into their shoes, and then make your strategy, right? Nothing works without a strategy. And इस चीज में I was talking about SMART goals. SMART का मैं पूरा acronym का बता देती हूँ. It means S is for specific. क्या गोल है आपका जब आप अपने बॉस के केबिन में गए या अपने मैनेजर के केबिन में गए? What is it? क्या सोच के आप गए? आपको क्या आउटकम चाहिए, राइट? सेकेंड, M is for measurable. आप किस चीज में इंटरेस्टेड है? बोनस में, पर्क में, डेजिग्नेशन में? किससे आपको खुशी मिल रही है? व्हाट डू यू थिंक यू डिजर्व, राइट? A is for attainable. आप ये तो नहीं सोच सकते that you'll become MD overnight, right? So whatever your goal is, perhaps you can become an MD if you're a vice president, right? Or whatever your goal is, it should be attainable, right? R is realistic. So attainable and realistic go hand in hand. And T is timely. एक महीने बाद अगर जो आप उसी टॉपिक को
दोहराएंगे या you will visit that topic after a month of appraisal, perhaps you've missed the boat and it's going to be Titanic, right? So it has to be smart. And agar jo dekha hoga Saurabhi, even as kids, we all were born with intuitive, communication. If we wanted some ice cream or some treat, we saw to the mood of our parents, right? We saw whether we have done our homework, that we'll be rewarded, right? We saw what words to use, right? कि pleasing हो behavior. तो ये हमको communication strategy बचपन में आती थी, we knew it intuitively. पर बड़े होते होते, with so much stress and so many things happening, we start gathering knowledge, which is good, but we start losing on communication skills. And at some point, अगर जो आपकी communication skills are not on point, it will be a big obstacle. आप You cannot be successful without the communication skill, and it can lead to lot of frustration. तो जो आपकी communication skill intuitive थी, उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है. And in my book, 15 mantras for effective communication, I'll just show you the book also. Usme I have said step by step. I have held the reader's hand and told them how to hone up your skill. आप कैसे अपनी skill को layer up करते रहें consciously till it becomes a second nature with you. So I'll just show you the book also. Just give me a moment. Till then we can just think of what other things would the audience like to hear on communication skill. या वंडरफुली कवर्ड मोहिता. मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि इंडिया में एक चश्मे से देखते हैं कम्युनिकेशन को, जिसमें इंग्लिश हमेशा कम्युनिकेशन के साथ एसोसिएटेड होती है. वो पॉइंट आपने पहले ही कवर कर लिया, क्योंकि हमारा वर्किंग इकोसिस्टम जो है वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देता है. दैट्स वाई दैट प्रॉब्लम कम्स अप. अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. हिंदी को भी एज अ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, बट mostly the channel is English oriented. So there is a difficulty when people they have problem while speaking English as a language, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं देखते हैं, एज अ कम्युनिकेशन स्किल एज अ होल पैकेज देखते हैं. तो दैट इज अ फैक्ट एंड दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस एंड पीपल इन इंडिया की यहाँ पे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं, कम्युनिकेशन स्किल के पैकेज के साथ देखा जाता है. So next is that there is one quote that communication work for those who work on it. So what is your take on it? Absolutely 100% with that, Saurabhi. Just like how you said कि English अब हम emails लिखते हैं, जो आपका Microsoft Word है, कोई भी आपकी computer system है, which is mostly Word, is MS Word, etc. Now I will tell you a little secret. I'm sure a lot of us here are also practicing the same, but I'll tell you something. Whenever there is some sensitive mail which I have to reply, mostly on email, but sometimes on WhatsApp or on other channels also, जब भी कोई sensitive reply होता है, I write the mail, but I don't send it. I revisit it in another 15-20 minutes after doing something else. कोई और काम करके फिर से मैं आती हूँ उस मेल के आंसर पे, right? It could be somebody who's getting frustrated, or it's somebody who is wanting unrealistic deadline. It could be anything. So it is wise not to send your words or your emails at the first go. तभी कहते हैं कि formal communication में written communication is the best. Saurabhi, you must have heard के बाण से निकला हुआ तीर and मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं ले सकते, right? Yes. A spent arrow and a spoken word can never be returned, right? So I sometimes revisit the mail or revisit my answer or response some 4-5 times, and I get a new perspective. I start empathizing from the other person's point of view.
And then when I'm satisfied that yes, it is giving clarity. एक और चीज बता देती हूँ, जब हम बात ही कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, इट्स कॉल्ड ABC of communication. A is for accuracy. ठीक है, आपका कम्युनिकेशन शुड बी एक्यूरेट. ओके, इट शुड नॉट बीट अराउंड द बुश. B is for brevity. Brevity माने short, crisp, right? C is for clarity. तो इसको कहते हैं ABC ऑफ कम्युनिकेशन. तो जब भी आप किसी को भी रिस्पॉन्ड करें, स्पेशली व्हेन इट इज इंपॉर्टेंट, आप जरूर चेक करें वेदर इट स्टैंड्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ABC. एक्यूरेट है या नहीं है, पढ़ के देखो. जो उन्होंने पूछा था आप उसी का आंसर कर रहे हो या 3 अलग चीजें बता रहे हो, राइट? बी ब्रेविटी. शायद इतनी सारी चीजों की बात करने की कोई बात नहीं है. ब्रेविटी माने बी ऑन द पॉइंट, बी फोकस्ड. सी इज क्लैरिटी. अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, आपको एक नई डेडलाइन देनी है या आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, बी क्लियर, राइट? तो just like you said that communication works for those who work at it, it's very true. और मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि it does. आप उसी चीज को वापस जाके देखेंगे, फिर से कंसिडर करेंगे, you will give a better reply, a clearer reply, something which satisfies the objectives and satisfies the objectives of both the sender and the receiver. यहाँ पे एक तरफा चैनल नहीं चलता है. ये नहीं कह सकते आप कि मैंने तो बहुत अच्छा किया कम्युनिकेट, मैंने तो सब लिख दिया था, राइट? I communicated very well. I don't know what happened to the other person. That person, has poor communication skills. No, that person doesn't have poor communication skills. Your communication is successful only कि जब आप जिस इंटेंट से और जिस ऑब्जेक्टिव से बोले या लिखें, उसी ऑब्जेक्टिव और इंटेंट से दूसरा रिसीव करे, ओनली देन इज इट सक्सेसफुल. तो आप ये सोच के देखो सौरभी, दैट it takes so much practice for us to think that we have done our job. Is not doing the job. It is done only when the receiver receives it with the same understanding and perspective as what you sent it for. So yes, it is important. Wow. एक और चीज बताती हूँ. एक हम सब ने इंडियन लिटरेचर में पढ़ा होगा, द ऑथर goes by the name Rudyard Kipling. And he writes a lot of jungle stories. And उसकी एक 6 लाइन का, it's a very very famous quote come poem that I have 6 honest men, I keep 6 honest men, why, what, where, how and why, right? मतलब मेरे ये 6 हैं आदमी जो जो पूरा तहकीकात करते हैं whether my response is right. So I would appeal to everyone who is interested in good communication skill, कि आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें when you have framed your reply or when you framed your message, right? क्या आप क्या बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं, किसको बोल रहे हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलेंगे ना, राइट? कैसे बोल रहे हैं, किस माध्यम से बोल रहे हैं. इफ इट इज फॉर्मल तो परहैप्स ईमेल इज बेटर, क्योंकि आप एकदम से जाएं और कुछ, इफ इट इज अ सेंसिटिव टॉपिक देन बहुत गर्मा गर्मी नहीं हो जाए. वैसे भी ईमेल इज सपोज टू बी अ फॉर्मल चैनल. तो आप कौन से चैनल से बोल रहे हैं, या आपको फ्रेंड को सॉरी कहना है, राइट? तो परहैप्स गोइंग is better in person with perhaps flowers and chocolates, right? और इससे अच्छा कम्युनिकेशन कोई नहीं है. वर्ड्स एक होते हैं चैनल, बॉडी लैंग्वेज इज अनदर, और ये सब आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यू वेंट अपोलोजाइज करने के लिए या हैप्पी बर्थडे करने के लिए विद अ केक, with a cake, with a gift, with flowers, with chocolates. So what are you saying? You are saying, I love you. You are my best friend. I have taken time for you.
I have put aside time for you, I care for you. तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन. तो सिर्फ बोलना ही नहीं, योर बॉडी लैंग्वेज, योर नॉन वर्बल क्यूज, तो इसे कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज. आपने फूल भेजे बहुत सारे या खुद लेके चले गए, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट. जैसे आपको, आप डिनर टेबल पे बैठते हैं, राइट, एंड सबसे पहले होता है विजुअल. यू कम्युनिकेट बाय सीइंग, और आपने देखा 5 डिशेज हैं, दे आर ब्यूटिफुली लेड, द टेबल इज ब्यूटिफुल, राइट. So that in itself says, wow, it's wonderful. तो ये eyes, आपके सब senses से communication होता है. वाओ. सो वेरी क्विकली आई कम टू वन मोर टॉपिक. आप जैसे मैंने आपके और एक इंटरव्यू में सुना था कि यू हैव वर्क फॉर राय फाउंडेशन ऑल्सो, सो देयर वर सो मेनी कॉलेजेस एंड देयर वर क्लचेस अंडर यू, so you had a variety of sectors to work with. So is it that the communication differs with every industry, or the sector, is it sector specific? Saurabhi, you are so right, it does. जैसे Rai Foundation had a clutch of 21 colleges, at one point of time. So there was a college of pharmacy, there was a college of nautical studies, meaning ship studies. Then there was a hospitality college. Then there was a college of media. Then there was a college of pharmacy. बहुत सारे colleges थे, right? अब ये है कि हर एक का ऑडियंस अलग है. जो फार्मेसी करना चाहते हैं बच्चे या स्टूडेंट्स, और जो मीडिया करना चाहते हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, दे हैव डिफरेंट गोल्स इन लाइफ, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने कहा था ना, यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ऑडियंस, राइट. तो ये कम्युनिकेशन इज नेवर वन वे. सो अगर जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, सो देन यू हैव टू सी के इनके क्या गोल्स हो सकते हैं, टिल वेयर डू दे वांट टू रीच, राइट. मीडिया है तो इन स्टूडेंट्स का क्या गोल है, इन लोगों का क्या बैकग्राउंड होगा, फिर आगे चल के इनकी इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स क्या हैं जिससे इनको फायदा रहे, राइट. सो ऑल दिस, एक तो देखिए मोटा मोटा तो गोल्स होते हैं सक्सेस. So success is a huge umbrella, but when you come down the verticals, हर एक umbrella के अंदर सब umbrella है, then you have to address that particular group of students, and you have to answer the little questions in their little minds. As I always say, that you have to address the little questions in everyone's mind, कि ये मेरे लिए ठीक है ये वाला course, is it for me, will I get good industry placement after this, am I going to get industry exposure in my internship, right. What sort of faculty is there, is it industry experienced faculty, what are they promising me, what is the fee structure, what till now have been the placements like, is it accredited. तो ये सब आपको उनके माइंड में जाके कि उनके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, you have to answer those little questions in their minds. And before we go ahead, just give me a moment and I'll just take out my book. It's here. No, this is not it. Okay. Thank you folks for being with me, and I would love to show you my book. Saurabhi and I have been writing in allied spaces, but well, we have had the same journey. And thank you, Saurabhi, for being with me, and for having similar milestones. Wow, thank you so much, Mohita, that you have answered so many questions that I have put up in front of you. I think that audience, they must have got so much clarity regarding communication and why communication is so important.
So, and thank you for showing your book also. So I'll request the audience that if you want to enhance your communication skill, go ahead and buy that book, 15 Mantras of Effective Communication. This is written specifically for the workplace. So Yes, it you can is. go ahead and grab a copy from Amazon. I'll just drop the link in the description box and make the most out of it, because what I feel that communication is a wheel on which your vehicle will roll on. Without that, you cannot go far. You have to drag yourself. So if you want a swift journey to be swift, and you want a swift sail in this life, and whatever you do to achieve all your goals, you must pick a copy of our book, 15 mantras of effective communication. So thank you so much, Mohita, for coming here Thanks a and lot, Saurabhi. enlightening us regarding communication. बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है लोगों को कम्युनिकेशन को लेके काफ़ी डाउट, काफ़ी क्वेश्चन होते हैं. तो they can reach you. I think audience, you can even email Mohita, or you can Absolutely. visit her website. I'll drop all the links in the description box so that you can get in Right. touch with her to get on the rolls, so that you can keep rolling, and very soon you will reach your destination. Right. And Saurabhi, you got it just right. It's a lubricant. Instead of taking the hard way up and then losing your goal and getting frustrated. And also, it makes your journey so much more beautiful, right? Nobody here wants to be a Titanic, they want a yacht. So, when you want a luxury yacht, get yourself communication skills. Wow, so thank Thanks a you lot, once everybody, again. for your attention. Yeah, thank you, Mohita, for coming here. Thank you so much. So, people, keep watching Aap aur Hum, Saurabhi ke Sang, and every week I'm going to get a guest over here on my platform, and I'm going to give so many insights regarding different topics related to our life, so that we can upgrade ourselves and we can reach our goals very quickly and in a very swift manner. So, thanks once again, Mohita. Thank you, Saurabhi. Thank you, everybody, for your time. Keep watching Saurabhi Kesang. It's a wonderful platform. Thanks a lot. Take care, everybody.